3 minutes? Okay. Yes. So I would like to welcome again Nivedita ji on this forum, and we are grateful that she has given time to us from her busy schedule, and she is here to guide us, to give us the direction how we can work with OTT, TV, and Bollywood industry. Ma'am, Nivedita ma'am is here. Hi, thank you so much for welcoming me. It's such a pleasure. Thank you, Nivedita ji, for giving your precious time to guide us and to enlighten us with your experience, knowledge. I hope I'm able to add value to your forum. We are very positive about it, that definitely you are going to add so much to our forum. The first initiative you have already taken, that you have given us the time. Thank you so much. It's a pleasure. Thank you very much. Thank you. Nivedita ji, before I start the session, I would like to request you to share your experience and your journey, and what are the challenges you have faced in your journey. Thank you, Madhuri ji, for introducing me. So I joined the industry, I think, I can always call myself a trendsetter, and that because when I joined television, there was no concept of daily soaps. You know, we had all grown up watching Doordarshan ke Nukkad, Bunyad, Hum Log, and 2000 is when KBC and Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi started. And I was fortunate enough to join Balaji by then and be a part of history. So if you've seen my characters, you know, so I've also had like always this bend of fashion, but I always created my own fashion, you know. In fact, today only I was having a discussion in my office, you know, where people were like, oh, I wear brands, I wear this. And I said, I wear whatever I find will look good on me, you know. I don't care if I pick it up from the street or I pick it up from, you know, a fancy store. It has to resonate Nivedita BASU, you know. So the same thing I transcribed obviously on screen, you know. So when I made my characters, I remember specifically Komolika when I made on Kasauti Zindagi Ki, or when I had Ramola Sikand, you know. So they became iconic because we made sure that every character represented, you know, their taste in terms of clothes, you know, because it was very aspirational, you know. The common man, when they watch, they want to become a particular character, whether it was Parvati, whether it was Tulsi, you know. So they had a particular style, a particular fabric, the way they draped, what jewelry they wore. So from head to toe, I used to be very, very, you know, involved in it. In fact, if you go back and see Mr. Bajaj Ronit's interviews also, he'll tell you that, I mean, it took me 8 hours to get that look of, you know, Richard Gere on him. So I am very, very, you know, like vocal about the fact that, you know, whether we create characters in fiction or whether, you know, we write it in the copy on a book, but it has to speak, the clothes have to speak the character very well. And I think that is what anyways designing is all about. You know, when you have a designer putting their designs out, they want to represent what they stand for. You know, so today if we stand for handmade fabric or hand woven fabric, I totally stand for it, which is why when Shagun told me that, you know, that they are doing something like this, I said, I'd love to jump in because I'm somebody who wears, you know, very rustic and very earthy clothes. You know, I'm not somebody who you'll see in very bandaged clothes, you know, and very Manish Malhotra like creation. I mean, I totally respect them, but it doesn't represent me. You know, I can't imagine myself in that attire and feel comfortable. I feel more comfortable in, you know, I am somebody who wears like a linen kurta and goes for a wedding. You know, very important that you should feel comfortable. Yes. Yes. So for me, fashion is, like I said, I can wear a linen kurta and pajama and wear nice cloth jewelry and, you know, handmade jewelry and feel like I'm super fashionable in a wedding also. So yes, that's where the second part of my question was, do you face any challenge or how you overcome them, or without any your voice, challenge, Madhuri, is a little pursue your question journey. माधुरी जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज आप रिपीट कीजिए अपना क्वेश्चन. I was asking the second part. Is it clear now? Yes. हाँ जी, थोड़ा. Is it clear now? Yes, yes.
Comparatively better. Okay. My second part of the question, second part is there any challenge you have faced? Challenge in terms of personally or when it comes to Professional challenge, professional challenge. Professional. because today when I'm Ma'am, youngster, they're so lucky. And I'm like, in my head, I go back into a flashback of 20 years that what has luck got to do with it? You know, I don't come from a media. My Nivedita family, ji, your dur dur tak was in voice media, you know. is So your voice is also not breaking, clear, ma'am. my voice is not coming clear. Yeah, now it's clear. Okay, I've gone on mobile data. I hope it's better now. Is it audible now? Yes, yes, you are Yeah. audible. Yeah. It is breaking. Is it still breaking now? Yeah, it is better now. Yeah. So I said there isn't any job. I think if there is a job without any No, it is clear now. challenges, then it's a job to sleep, I think, because that's the only place where you won't have any challenge. So particularly when you come from a media background, I think it is extremely difficult, you know. So when I have newcomers coming in, I tell them, don't think it's like a cakewalk, you know. When you sit in small cities and you see the life of, you know, people in Bombay and on social media, you suddenly feel that, oh, it's such an exciting life. You're meeting actors all the time. Oh my God, you just Yes. approve shoes and, you know, shows and putting it out there. But is BASU. on the contrary, it is extremely stressful. And challenges are like, I mean, they're like innumerous. I can't even put them in numbers, the amount of challenges you can get, you know, trying to fit into this line. So yes, of course, I also had challenges, you know, because when I joined the company, there were already people who were experienced in the line. I had just come in as a 19-year-old in Balaji, I remember. And everyone was trying to make sure that, you know, I don't exceed. But luckily, Ekta was, you know, had that foresighted. Your voice is not audible, Nivedita ji. Hiral, Yes, आपकी भी voice Nivedita ma'am, Nivedita ji? mute आइए. Muted by any chance? Could you all hear me? Yes, you are audible, Nivedita ji. Okay. So I said, see, challenges are everywhere. I don't think there is any job. I think even a job of a housemaid I've seen has challenges. I've seen my maid coming and, you know, getting thrown out of a place after 15 years just because they don't need a help. They have a permanent help. So challenges go everywhere. It's about how strong you make yourself personally to fight those challenges. I mean, the idea is to not give up. The idea is to stand for what you believe in and to do you know, to do constantly the same thing again and again, in spite of being pulled down, in spite of being criticized, in spite of getting all the negative flag, and yet smile every morning and come back with the same zest to perform in a better way. I think that is what a successful entrepreneur or a professional is. and somewhere I believe that challenges give you chance to grow and give you chance to be more confident. See, like I said, Madhuri ji, it all depends personally on people. You know, I know of so many people. I think off late after the pandemic, we heard so many people, you know, going through a lot of stress. They could not take the stress, you know, of having no work, especially as actors and as professionals. You know, like I said, there is competition every day. There are actors coming in every day. Nivedita ji, आपकी voice again breaking. Your voice is breaking again. Let's see. We can't hear you. Can you hear me now? Yes, now audible. Yeah. I said the whole idea is to basically keep reinventing yourself, you know, because see, you will become jaded, you will become outdated at some point in life, you know, whether you're in fashion, whether you're in content. You have to keep working on yourself. It's work in progress. You can't just think that, you know, you have arrived because, you know, 10 years back you were awarded some, you know, some Very true. position or some award or reward in life.
also when I sit and I meet my, associates, I always have so much to learn from them. And they're like, "Arey ma'am, how can you be your Nivedita BASU?" And I'm like, "Are you crazy? I mean, the day I think I'm Nivedita BASU Very and I true. stop learning, I think that will be the end of my graph. And I don't want that to happen. So the idea is to keep learning, whatever the age may be. There is every day there's something new to learn." I agree with you 100% because if we are learning, we are live. Otherwise, we are dead, right? So I also believe that we keep on learning and keep on exploring, because when we are learning, we come to know about new capability of ourselves, and we explore new person within us. So that is very true. And who is your inspiration for this profession? See, like I said, I worked under Ekta Kapoor. So for me, she was like a huge mentor, because I saw somebody who was only 5 years older to me, reaching these new heights, being so successful, running an empire. I mean, she was somebody who would walk into a shooting floor and I would see men, who are like 50, 60-year-old getting scared and getting intimidated by her. Then I understood the power she had, and it had to do with her work. It had to do with her success. It had nothing to do with, because that she's Jeetuji's daughter or she was Shobha Kapoor's daughter that people were scared. It was because she had success backing her. It was because people wanted to be employed under her. People were running their houses by her company. So for me, she was like a huge, huge impact, in my professional life. And I totally give her my credit, of reaching this position to her. Okay. Acha, Nivedita ji, there are so many upcoming designer who are attending this workshop. On behalf of them, I would like to ask you, suppose anyone would like to way, and what are the qualities you are looking for a designer or a costume designer? माधुरी जी, ऐसे see, I work on a lot of verticals. जैसे अभी मैं टेलीविजन है मेरा एक वर्टिकल, फिर मेरा एक वर्टिकल है वेब सीरीज, फिर हमारे वर्टिकल्स है सोशल मीडिया. तो हमारे काफी सारे वर्टिकल्स हैं कंपनी में, व्हेन आई एम द कंपनी आई एम एसोसिएटेड विद इन अतरंगी. सो टेलीविजन में जैसा मैंने कहा कि डिपेंड्स ऑन द स्टोरी, सो usually in any field, I think today it is how competitive you are. It is like Amazon. अगर आज आप 5 वेबसाइट पे जाएंगे, आप सबसे पहले जाके देखोगे कि कॉस्टिंग आपके लिए कितनी पड़ रही है. So while you are good at your work today, if you are not cost effective, you are redundant, especially in fashion. I Very mean, true. आज वो पुराने जमाने में होता था कि हम लोग अपनी दादी की बनारसी साड़ी 50 साल पहनेंगे. आज सोशल मीडिया में इतने रोज रोज पिक्चर बदलने पड़ते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ठीक है, फैब्रिक 19-20 होगा तो चलेगा, डिजाइन अच्छा और स्टाइल अच्छा और मेरे पास रोज नया फोटो डालने के लिए, नया कपड़ा डालने के लिए. एंड दैट गोज नॉट दैट माय स्टैंडर्ड आल्सो, माधुरी जी. आई हैव सीन that goes for my girls, my nannies and my housemaids who work in, like they're young girls. It goes for them also. I see the amount of clothes they order. I see the amount of Yes. times they go out to shop, the way they get, influenced by what a particular character is wearing in a show or a web series or a film, and they want to add their own bit of fashion. So I think fashion is, like I said, it is about a statement you want to make with your clothes. And today, इफ आई टेक अ डिजाइनर से, आपके इसमें से कोई 10 लड़कियां निकल के मेरे पास आती है और बोलती कि हम ये डिजाइन बनाते हैं. अब देखिए, मेरा शो है से एक गांव का शो है. एक लड़की, छोटी गांव की लड़की जाके एक अमीर घर में शादी करती है जो गुजराती फैमिली है. सो मेरे बेसिक्स तो सेम ही रहेंगे. गुजराती छोटी गांव की लड़की है और एक रिच घर में जा रही है. तो अब इन 10 डिजाइनर्स में मैं अपना फ्रैंकली एक वो बता रही हूँ कि मैं यूनिकनेस तो देखूंगी, क्योंकि आई अज्यूम जब 10 मैंने शॉर्टलिस्ट के तो यूनिक तो होंगे. बट मेरे लिए एक वो होता है कि एज किस में है, मतलब किसी ने एक डिफरेंट या छोटी सी चीज दी जो एक ऑडियंस पकड़ ले और बोले कि यार हमें वो तुलसी की साड़ी देना. और उसके अलावा फ्रॉम 2000 टू आज अगर मैं बैठती हूँ 2023 में, द बिगेस्ट कॉस्ट, द बिगेस्ट फैक्टर, लाइक आई टोल्ड यू, इज आल्सो गोइंग टू बी कॉस्टिंग. अगर आज मैं एक डिजाइनर को लेती हूँ एक पर्टिकुलर शो में, चलिए इस शो में मेरे पास पैसा ज्यादा तो मैं महंगी वाली ले लेती हूँ, बट अगर वो मेरे लिए कम पैसे में इसमें डिलीवर करेगी तो मैं उसको बोलूंगी चल यार इसमें कम ले ले, मैं तेरे को 4 शोज दे देती हूँ. So there, costing is another factor which we should put in, when we are designing or whether we are creating something, because that is exactly what we are doing in content also. अगर उस 20 साल पहले मैं content बनाती थी 25 लाख का, आज मैं वो सेम ही concept और content आज मैं 3 लाख में भी बना रही हूँ.
क्योंकि ऑडियंस क्या है, नया नया चीज रोज देखना Okay. चाहती है। तो अब मैं 10 साल नहीं चलाऊंगी क्योंकि सास भी कभी होती है, मैं आज एक तो- शो चलाऊंगी 4 महीना, फिर मैं 4 महीने बाद उनको नया शो दूंगी, फिर मैं बिल्कुल। नया शो दूंगी। नया So कुछ you और देंगे। constantly have to जी। innovate yourself and in a particular cost. So like I said, today designers, if they want to come into this field, along with being diverse, that they can create from A to Z everything. They can do a Bhumi Pednekar in Dam Laga Ke Haisha to a Kiara Advani in a wedding. That is the kind of graph one needs to have. Movie. But along with it, they should have the costing to do it. If you come today to a TV serial or a web, nobody will take a designer out from a Manish Malhotra. I mean, unless I'm doing a show which is, Housewives of Bollywood. उसमें मैं वो लगा दूंगी क्योंकि मेरे करण जौहर और XYZ हैं. बट 99% कंटेंट जो जा रहा है, जो आपके वेब और इसके होते हैं, वो हम लोग अच्छे लगते हैं जो दिखे अच्छे, पर उनके कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए फॉर अ प्रोडक्शन. Can you hear me, Madhuri ji? Am I audible? Yes, you are audible. Okay. I believe a designer, one designer, any designer should be aware about whether they are working for TV. Yes, I can hear you. Am I audible to you? आपकी थोड़ी Okay. आवाज I believe कट रही costing is a है. very important aspect, whether we माधुरी are जी, working for OTT TV आपकी or we आवाज are ब्रेक हो रही है. working for. Hello, माधुरी Nivedita जी, ji. your voice is breaking. Am I audible? Yes, I think आप Namrata. वीडियो ऑफ कर दीजिए माधुरी Yeah, जी hi, this is without a video. Namrata. Hmm. So if my voice is clear, I'll Yes, just have a Namrata, your small voice is clear. question. You can start. I have Yes. a small question. Now the Yes. fresher designers who just passed out and they have a bigger dreams and Yeah. they are definitely looking for the help that they need. So is it that they should have that kind of a background, or how do they connect with the media platform? Is there any way to it? See, Namta, I'll tell you, see, clearly today the position and the place where I'm sitting at, see, today if I have to hire a new, fresh, fresher, I know there will be a lot of setbacks they will go. Nivedita ji, now your voice is breaking. Tell them that Your attach voice yourself is not to a coming. designer. Can you hear me? Yes, yes. Yes. So मेरा बेसिक लेसन जो होता है ना, जो मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल है. सी एक है कि मैं बहुत एस्पिरेशनल और ड्रीमी हूँ कि भाई मुझे कल ही बनाने हैं कटरीना कैफ के कपड़े, और एक है कि चलो यार ये तो बहुत इम्पॉसिबल है इमीडिएटली स्टार्ट करने में, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा कोई कनेक्शन नहीं है एंड Katrina is not sitting to just take my design, she already has like a 2000 list of designers. So the easier route I find to tell my fresher people is that, see, today Katrina is wearing these 15 designers. Now, which is the designer amongst these जो मेरे से closest है, मतलब मेरे designing और मेरे ideation से. Then I reach out to them, और ऐसा नहीं कि वो भी करेंगे, उनकी team से मैं reach out करती हूँ, and even if it is the lowest denominator of work in that designer's, kitty, I will ask them to go and join there. क्योंकि होता क्या है कि कोई भी जॉब में आप इमीडिएटली ऊपर नहीं जाते, और अगर वो लोग बोलते हैं ना कि बस हो गए, तो वो एक आध बार लकी हो सकते हैं, बट जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो आपके ग्राउंड जो रूल्स और जो आपके ग्राउंड बेसिक्स है ना, वो इतने ज्यादा सॉलिडिफाई कर जाते हैं कि यू विल नेवर फॉल्टर. तो डोंट थिंक अबाउट गेटिंग लकी कि एक ही बारी में आपको कोई बड़ा शो मिल गया, या आपको कोई बड़ा डिजाइनर मिल गया, या बड़ा कोई आर्टिस्ट मिल गया जिसको आप स्टाइल कर रहे हैं. ठीक है, you take it as a good luck thing that you got it, but like I said, learning is a process. So if I was a new fresher out of a fashion school, I would shortlist say 50 designers I want to work with, and then reach out to their teams and tell them that I want to be a part, because see, there is so many aspects in styling and designing when you come into the the practical world. When you're learning in school, it's very different. Like we learned filmmaking in school, but when we came to practically to do a job, we realized that it was nothing, even though we held the camera Completely 50 times different. a month. It is very, very different. So when you reach, like people who are doing this work day to day, you suddenly realize, I've seen people who actually change streams. मतलब 6 महीने काम करके डिजाइनिंग, उन्हें सडनली रियलाइज है कि नहीं यार, मुझे मेकअप करना है या मुझे एक्टर बनना है. तो वो जो आपको टाइम देना है ना अपने आप को, वो दीजिए. मतलब डोंट रश थ्रू थिंग्स. ऐसा नहीं है कि आप इसी में ओल्ड हो जाएंगे कि आप बस किसी के अंडर ही काम करते रहे. वो आपके डायनामिज्म पे, आपके लर्निंग पे है.
बट डेफिनेटली ये पाथ लीजिए विच इज एन ईजियर पाथ. आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, आपको श्योर शॉट काम मिलेगा, क्योंकि आप एक डिजाइनर के पीछे नहीं जा रहे. आपने 50 शॉर्टलिस्ट किए और मेन डिजाइनर के नीचे काम करते हुए हर टीम के 50 लोगों से आप रीच आउट करेंगे. सो आई एम प्रिटी श्योर, मतलब 50 में से आपको 5 तो मिल ही जाएंगे. मतलब मैं इतना रियलिटी रेट रखती हूँ कि 5 लोग आपको कनेक्ट करके बोलेंगे कि यार आ जाओ, शायद आपको कम पैसे दे, शायद स्टाइपेंड में रखे, बट आप अपने ये सोच के चलिए कि देयर इज सो मच टू लर्न, and for you also to get your basics clear that this is what you want to do. See, so early in age we are never sure what we want to do. We have seen people after 50 years where suddenly they realize they want to be interior designers, or suddenly they realize they're singers, they get into, you know, cover singing. So you never know where you're headed in life. It's always good to train yourself in something and see how it goes. When you work with practically with people, you will realize that it's a very, very different learning. Yes, and when they join the organization, any of the organization, then only they can come to know how capable they are. You know, Yes. doing course and thinking about it, ki one day I will become this and that. Until unless you don't do it, you don't explore that opportunity, you won't be able to know about your capabilities. So I believe Yes. the first step they should go is they should assist someone so that they can learn what exactly they are supposed to do. Exactly, Right? because in Yeah. designing Okay. also there are so many things, Madhuri ji. It's not like कि बस एक कपड़ा Yes. बनाना है. What am I designing for? Am I good in Western? Am I good in Indian? Do I know Yes. this body type or do I know a thin body type? Do I want to do just ornamentation or designing from head to toe? So there's so many aspects which go into it. That is why I said once they will go into that kind of an atmosphere, then only they can be able to explore in what they are good and what are challenging for them. Yes. Anna? And one more thing I would like to ask you, that what are those practices that being a designer we should allow in this, like avoid in this industry, like so that one should not get manipulated? Because that is very important question. That is very important question. See, like I said, if you're a fresher and working under somebody, you're anyways lessening your stress and your odds of getting manipulated, because you have so many ladders in between before it hits you. So that is the first Yes. step you do as a fresher. Secondly, like I said, see, in any line, Madhuri ji, there is deceit, there is pulling people down, there is manipulation. ये बहुत actually इसमें आप after a particular point you'll start knowing people, you know, you start judging them better. You will come to know that probably what they are saying is not what exactly what they want. So I think it is just a very personal thing. ये ऐसी ट्रेनिंग है कोई बता नहीं सकता. You know, हम लोग, मेरे को याद है जब हम लोग क्यू की कहानी, कसौटी ये सब बनाते थे, और मेरे पास बहुत सारे नए लोग आते थे कि हमें फॉर्मूला दीजिए कि क्या हिट फॉर्मूला है शो बनाने का. मैंने कहा यार ऐसा होता तो फिर तो सबको फॉर्मूला बेच के मैं आज मिलियनेयर बन गई होती. So there is no formula as No. such, you know, कि आप manipulate ना हो इस industry में. But like I said, there are ways of lessening the impact of manipulation. Like I said कि आप as a newcomer पहले किसी trained लोगों के साथ करिए जो इस field में हैं. तो उन लोग का क्या है कि वो थोड़ा कम cheat या manipulate होंगे, तो आप सीख जाएंगे उनके अंडर better कि यार ये भी होता है. ऐसा नहीं होता कि जो बोल रहा है प्रोडक्शन या चैनल हमेशा वही होता है. कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनसेड होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें लेना पड़ता है एज अ, यू नो, लाइक एज अ सेटबैक. तो बहुत सारी चीजें हैं, बट लाइक आई सेड कि keep your eyes and ears open, be ready to get manipulated. You know, don't think that, you know, you have done everything good in life, so good will happen to you. Unfortunately, life is not like that. You know, there will be a lot of setbacks, there will be a lot of manipulation. It's how strong you make yourself and decides to stand back and come back again with the same zest. I think that is the key. I think they should be ready for, so many rejections also. They should be ready for Failure manipulation is in the a biggest. failure. See, failure is the Yes. stepping stone of success. अगर आप, मतलब अगर आपको शुरू में ही सक्सेस मिल गया ना, होता है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कई लोग आते हैं और उन लोग फर्स्ट चीज में ही लकी हो जाते हैं, पर वो एक्टर्स के लिए भी और Yes. प्रोफेशनल्स के लिए भी एक्चुअली बहुत नेगेटिव चीज है मुझे लगता है, क्योंकि उसके बाद उन्हें लगता है यार हमें तो पहली बार मिल गया था तो अब क्यों नहीं मिल रहा. अरे एक बार आप लकी हो सकते हो, 2 बार लकी हो सकते हो, तीसरी चौथी बार शायद आपको वही ग्राइंड में जाना पड़े, और शायद लंबे ग्राइंड पे जाना पड़े, क्योंकि आपने थोड़ा सक्सेस तो देख लिया है. So I think don't get disappointed. See, everyone has their own journey. Like I said, 2 twins भी पैदा होते हैं घर में, पर हर एक की अलग जर्नी होती है. ऐसा नहीं होता कि एक जीनियस हो जाता है और एग्जैक्टली सेम चीज होती है.
Very true, very true. Nivedita ji, your voice is not there. Again, audible, not audible. Of the same. So, like I said, if that can happen with a twin sister brother, so we are humans. I mean, जरूरी नहीं है कि जो मैंने जर्नी अपने सीनियर की देखी है वही मेरी होगी. मेरे अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, मेरे अलग लोग होंगे, मेरे अलग काम होंगे, तो मेरे अलग सेटबैक्स होंगे, मेरे अलग मैनिपुलेशन होंगे. It's how I deal with them is a big that is a solution. Okay. So as you said, there are different type of projects, and according to that, we have budgets. But normally, sometime when students ask their faculties or their mentors that if we would like to enter into this stream, so what kind of pay packages or how it is going to be given to them as a fresher, or later on, so it depends on the project also. So what can they expect from this platform, OTT or television? See, like I said, it's like an outfit. Today you go and buy a cotton outfit. You have cotton outfit which cost 1 lakh also, and there are cotton outfit which come in 150 rupees also. So there are so many differences of that. But like I said, see, as a channel, nobody really hires a stylist because we outsource our work. So today I'm sitting in a channel, but yesterday I was in a production house like a Balaji. So a Balaji hires stylist, but वो cost depend करता है. अगर आज मैं 5 लाख का शो बना रही हूँ, तो definitely मैं एक एपिसोड का 50,000 तो नहीं दूंगी स्टाइलिस्ट को, क्योंकि मुझे इतनी चीजें करनी है. बट शायद मैं 25,000 दे दूंगी. तो वो डिपेंड करता है कि एक परसेंटेज सेट होता है एक प्रोडक्शन कॉस्ट से फॉर अ स्टाइलिस्ट, कि उसी में क्लोथ्स आ जाए, उसी में उनकी स्टाइलिंग हो जाए. और यूजुअली टेलीविजन काफी रेंटल्स पे चलता है, तो एज अ स्टाइलिस्ट अगर कल को कोई वेंडर भी बनना चाहता है, तो बहुत लोग क्या होते हैं, वेंडर्स बन जाते हैं कि यार हम इतना इन्वेंट्री बनाएंगे, हमें शौक है डिजाइन करने का, तो चलो मैं 100 चीजें बना लूं. बट कितना भी आप बना लो, आप इतना इन्वेंट्री टीवी का नहीं कवर कर पाओगे कि आप सोलो वेंडर होगे. बट अगर आप स्टाइलिस्ट बनने जाओगे, तो जैसे मैंने कहा कि अगर एक स्टाइलिस्ट समझिए 5 शोज करी, तो उसको शायद 5 लाख भी मिल जाए अगर वो नोन है टेलीविजन में, और उसके असिस्टेंट्स को वो शायद 10, 15, 20, 25,000 भी दे, इफ आई एम पुटिंग अ नंबर इन अ करेक्ट फेस. बट वो आपके 5 लाख के शो का होगा. सिमिलरली 2 लाख के शोज भी बन रहे हैं. तो हर एक शो की अलग डिमांड होती है. लाइक आई सेड कि शो का परसेंटेज होता है, मतलब उसी 2 लाख में उन्हें एक्टर्स भी चाहिए, उन्हें लोकेशन भी चाहिए, उन्हें कैमरा भी चाहिए, टेक्नीशियन भी चाहिए. तो शायद एक बहुत ही छोटा अमाउंट होगा जो स्टाइलिस्ट के पास जाता होगा, मे बी 25,000, जिसमें उसे 10 एक्टर्स को कपड़े भी दिलवाने हैं, उनको स्टाइलिंग भी करना है. तो लाइक आई सेड कि दीज आर ऑल सेटबैक्स. मतलब एक डिजाइनर ये सोच सकता है कि यार मुझे तो 50 लाख मिलता था समझिए महीने का, जब मैं बालाजी में काम करती थी, तो अब मैं 2 लाख में क्यों करूं महीने के. तो ये भी एक चैलेंज है जो आपको ओवरकम करना है. देखिए, पहले एड रेवेन्यू होता था 10 लाख फॉर से 100 मिनट स्लॉट, पर आज एड रेवेन्यू वही 10 लाख है, 1 लाख. तो जब एडवर्टाइजिंग वाले चैनल को नहीं दे रहे, तो चैनल वाले प्रोडक्शन हाउस को क्यों देंगे उतना पैसा जो टीवी के टाइम पे देते थे. तो इट इज अ विशियस सर्कल व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड. यू हैव टू कम टू टर्म्स विद इट. यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. इनफैक्ट मैं सिर्फ डिजाइनिंग नहीं, मैं जनरली भी ये लोगों को बोलती हूँ कि डोंट गेट स्टक इन योर हेड कि ये पास्ट में ये बबल है कि यार मुझे तो इतना मिलता था, यार मैं तो इसके इतने के केपेबल हूँ. आज आप किसी कम पैसे में कर रहे हो या कुछ छोटा काम कर रहे हो, तो काम छोटा नहीं होता, आपकी मेहनत तो उतनी है. अगर आज आप दूरदर्शन का शो करते हैं, तो मेहनत तो आप उतनी कर रहे हैं ना. दूरदर्शन के लिए कर रहे हैं तो क्या हुआ, कपड़े आपने स्टाइलिस्ट होकर उतने ही कपड़े पहनाने आर्टिस्ट को. ऐसा तो है नहीं कि दूरदर्शन है तो चलो पैंट नहीं दूंगा मैं एक्टर को क्योंकि तू दूरदर्शन के लिए कर रहा है. तो वही ये बातें लोग समझते नहीं कि काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता. आपका पैशन डेफिनेटली दिख जाएगा. मतलब एक लड़की अगर आके आज मेरे को बोलती कि मैं दूरदर्शन में भी इतनी जान लगा के करूंगी, तो कल को शायद वो नोटिस हो जाए वो प्रोडक्शन या प्रसार भारती से, और बोले कि यार इस लड़की को लो, क्योंकि ये जो है ये मतलब ये डरी नहीं कि हमने दूरदर्शन का बनाया. उसको ये मोह नहीं था कि मैंने आयुष्मान खुराना की पिक्चर नहीं करी. मैंने करी थी एक आयुष्मान की पिक्चर ड्रीम गर्ल, पर अभी मैं दूरदर्शन भी कर रही हूँ. तो मैंने खुद अपना किट्टी ऐसे बनाया था कि मैंने कभी काम को छोटा नहीं समझा. कल आज हमारे दोस्त आते बोलते यार हमें प्रोडक्शन में हेल्प करो, तो मैं फ्री भी तो कर ही रही हूँ ना. तो अगर मैं फ्री का कर सकती हूँ 3 महीना, तो मैं 25,000 में भी कर सकती हूँ कुछ जो छोटा प्रोजेक्ट है, बट पैशन से बनाया जा रहा हो एंड आई बिलीव इन द प्रोजेक्ट. आज कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता है, शॉर्ट फिल्म बनाता है, तो हम मदद करते हैं उनकी. तो शॉर्ट फिल्म में शायद एक डिजाइनर को 5,000 रुपए मिले कि यार उसमें स्टाइल कर दे. एक लड़की का एक ही आउटफिट है, वो लड़की अपनी खोज में निकली अपनी माँ को एक ही आउटफिट पहन के, और वो एंड हो जाता है 20 मिनट का.
तो लाइक आई सेड, बी प्रिपेयर्ड इन योर हेड, सी डोंट गो विद योर, सी अगर आप एक नौकरी आज पैसे के लिए कर रहे हो तो आपका आधा पैशन तो वही दिख जाएगा, कि अगर आप पैसे के लिए वेरी ट्रू। नौकरी कर रहे हो तो वो नौकरी आपके लिए नहीं है, आप पैशन के लिए करो, पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे। Whereas I believe जितने प्रोजेक्ट ज्यादा करेंगे, एक तो एक्सपीरियंस मिलता है, दूसरा कनेक्शन भी बढ़ते हैं, और एक कनेक्शन, यू नेवर नो, यू आर वर्किंग ओवर देयर इन दूरदर्शन एंड समवन इज ऑब्जर्विंग यू, so जी जी, those connections are very important, I believe so. यस, दैट इन दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। आज जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज कोई बड़ा एक्टर कुछ शुरू करता है और बोलता है कि हमारे लिए करो, तो हम लोग तो करते ही हैं, यू नो, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। आज मैं उनको हेल्प कर रही हूँ, कल समझिए मुझे कोई उनकी हेल्प चाहिए, मैं कुछ पायलट कर रही हूँ और मुझे 2 मिनट का बाइट चाहिए। अब बड़े एक्टर्स तो नहीं आएंगे बिना 5 लाख दिए, बट क्योंकि मैंने एक फेवर करा होता है किसी टाइम पे, तो वो फेवर रिटर्न कर देते हैं। So in media, Yes. it's all about relationship. You can get a person for your project, you can request somebody to do something for you, all basis your relationship. So I would say never spoil your relationship in the industry, because यहाँ पे आप एक काम छोड़ के जाओगे ना, Very यही true. लोग पलट के वही दूसरी जगह पे आ जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री वैसे बहुत छोटी है। आप आज जिनके साथ काम करें, 2 साल बाद उनके साथ कर सकते हैं, 5 साल बाद वापस Yes. उनके साथ कर सकते कहीं ना कहीं बिल्कुल कनेक्ट। जी। अच्छा निवेदिता जी, एक क्वेश्चन और है कि टीवी ओटीटी पे काम करना और बॉलीवुड में काम करना, व्हाट इज द डिफरेंस? हैं। And See, how they in today's time, the difference is not there. You know, trust me, it has become. In fact, I know people now who want to work in OTTs more than films, because films क्या Okay. चले ना चले, कलेक्शन आए ना आए, you know, हम उनके पैसे ना होल्ड कर दिए रिलीज के बाद तक का। बट आजकल जो भी फिल्में भी बनती है ना, दे फर्स्ट थिंग दे डू इज दे लॉक देमसेल्व्स ऑन वेब, बिकॉज आपको ये पता है कि पिक्चर वेब में तो चलेगी चलेगी। आई मीन आई नो चलेगी। सो मेनी पीपल जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर वो बोलते हैं यार 1 महीना वेट करते हैं नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, यार चल 1 महीना वेट करते हैं हॉटस्टार में आ जाएगी। तो आज की डेट में क्योंकि सबको ही अपने पाम पे अपने कन्वीनियंस पे देखना Very चाहता true. है कंटेंट, तो क्या है, सिनेमा गोअर्स और फिल्म वाले थोड़े से कम हो गए। तो मुझे लगता है आज किसी को ऑफर मिलता है वेब सीरीज का या फिल्म का, इट इज एग्जैक्टली द सेम। मतलब वो पूरे बाउंड्रीज क्रॉस हो चुकी हैं। आज अगर शाहिद कपूर वेब कर रहा है फर्जी, या मनोज बाजपेयी कर रहा है, तो उसने ये तो नहीं सोचा था ना कि मैं गिर के कर रहा हूँ फिल्म से। और जो मेंटालिटी रख रहे हैं वो बिल्कुल। एक्चुअली स्टक है कि अरे यार वो फिल्म नहीं है, ये नहीं है। बट आई थिंक दैट बॉर्डर इज गेटिंग क्रॉस्ड। आई रिमेंबर अक्षय कुमार हैज साइंड अ वेब सीरीज, अनफॉर्चुनेटली वो स्टोरी क्रैक नहीं हुई, बट उसने तक वेब सीरीज साइन कर ली थी। So I think like internationally, actors have realized that any medium is the same. You know, it is about the work you're doing. Similarly, designers के लिए भी don't think कि टीवी छोटा है या शॉर्ट फिल्म छोटा है। आज आपकी शॉर्ट फिल्म एलिफेंट विस्पर गई ना ऑस्कर में, जीती ना Yes, yes. इसके साथ आपके RRR के गाने के साथ। तो कहने का मतलब वही है कि कोई भी काम को छोटा बड़ा मत समझिए। आज मेरी एक दोस्त है जिसने गुजराती पिक्चर, निवेदिता जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। निवेदिता जी, कैन यू हियर मी? निवेदिता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। निवेदिता जी, निवेदिता जी, क्या आप मुझसे सुन सकते हैं? थोड़ा ऊपर ओहदे पे रखा जाता है। Cinema and content is anyways little more refined and cultured than the Hindi, because Hindi में तो mass production होता है, but regional में limited होता है, but अच्छा होता है। अभी तो लिमिटेड में भी बहुत अच्छी मूवीज आ रही हैं, मतलब मैंने देखा है कि उनको काफी अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज है। इससे अपॉर्चुनिटीज भी और निकलेंगी, और आई थिंक इंडस्ट्री ग्रो भी करेगी। निवेदिता जी, इसी के साथ मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जैसे जो डिजाइनर्स हैं वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर, जैसे आपने कहा चैलेंज आएंगे, फेलियर आएंगे, है ना, दे शुड बी रेडी टू वर्क, what is your crux key, like how they should prepare themselves for these platforms? See, like I said कि आप while you're looking for your sourcing, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं हम आके बॉम्बे में रह लेंगे और खर्चे उठाएंगे। मैंने कहा आपको बॉम्बे आने की जरूरत ही नहीं है, थैंक्स टू सोशल मीडिया। मतलब हमारे टाइम पे ऐसे था कि हमें मतलब 20 साल पहले जब हम आए थे, हमें सूटकेस लेके यहाँ पे अपना घर का किराया ढूंढना था और दर दर जाके ढूंढना था कि काम कहाँ है। आज सोशल मीडिया ने वर्ल्ड को इतना छोटा बना दिया कि आप एक छोटे से शहर में भी बैठ के आप इन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। उन लोग से आप इतना कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि आपको अगर 1 महीने बाद वो यहाँ पे बुला रहे हैं
So at least you know sure shot that you are here to meet this person. When we started, Yes. we didn't know aimlessly anyone who we were going to meet and what we were going to meet for. So today the world that way has become a small place in the sense that you can connect with anyone you want to work with. See, the way you can prepare yourself is, like I said, see, today no designer will suddenly take a sweetie or a Richa just because, you know, she's come with so many, school certificates. When you go to meet somebody, see, everyone is looking for something unique and edgy, even in their assistants. Like today, when I hire amongst my 10 assistants, who do I hire? Somebody who knows extra, you know, about what we are doing, somebody who has an edge about the content I'm trying to make, somebody who has watched or read more content कि हर स्टोरी में वो आइडिया दे रहा है. तो वो 10 लोगों में वो 2 लोग ही चमकते हैं. जी. सिमिलरली आप जब डिजाइनर हैं तो आप जब दिखाने जा रहे हो उन्हें वो 4 अपने कॉलेज के असाइनमेंट में दिखाइए. आप अपना दिखाइए कि यार मैं इस चीज पे स्टैंड करता हूँ, ये मैंने अपने छोटे से इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया, ये मैंने. तो कॉन्स्टेंटली अपने आप पे काम मत रोकिए. सी जस्ट बिकॉज नौकरी नहीं मिल रही इसका मतलब काम नहीं रुकना चाहिए. आपको कॉन्स्टेंटली अपने पे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आपको काम मिलेगा आप उससे मारिए चौका. कहते हैं ना मौके पे चौका. बिल्कुल. तो वही वाली बिल्कुल, बात है बिल्कुल. कि मतलब एक क्रिकेट टीम है जिसमें 12 आपके प्लेयर्स फिक्स्ड है, बट एक इंजर हुआ तो आपको लास्ट एक ओवर में 1 ओवर मिला है करने के लिए बैटिंग. अगर आपने उसमें छक्का नहीं मारा तो बिल्कुल. आप याद रखिए आप बिल्कुल. वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे, बट अगर आपने मार दिया उसमें छक्का तो आपको डेफिनेटली आईपीएल में तो We are going to. So I believe, like in case if they would like to apply for any production house or any of the platform, they are supposed to, I think, do a good research about that before they meet anyone. It is not like whatever you have done in do your a good project. So research. if they will prepare, and you never know. Yes. And like I Yes, said, Nivedita, reach out बोलिए. to the designers. See, they are the right people who are doing work. आज अगर ये लोग बैठ के चैनल या प्रोडक्शन हाउस में अप्लाई करेंगे, so I don't think that is the right path. So here I'm telling you the right path is that today you want to be a stylist or a designer. So reach out to the stylists and designers you want to work with, the kind of work you've liked. Reach out to 50, 80, 100. See, 80 might not reply. The reality is that 80 might not reply. But Yes. the 20 who reply to you, you should have work of yours to show to them. Show Yes. them what you believe in. Show them what you stand for. You never know, a designer might like your design and say, यार ऐसा कुछ बनाते हैं आज के कैरेक्टर के लिए. So constantly work on yourself and reach out to the correct people. It's like, see, today, say if I want to do, मतलब सोचिए मुझे आईपीएल का मैच देखने जाना है और मैं यहाँ पे बैठ के सेटिंग ढूंढ रही हूँ कि यार कौन सा डायरेक्टर है जो आईपीएल मैच देखने जाता है. दैट इज अ रॉन्ग कनेक्शन. मुझे अगर आईपीएल देखना तो मैं ये देखूंगी, अच्छा मैं किसी को रिलायंस में ढूंढती हूँ जो खेलता है, या मैं किसी क्रिकेटर्स के भाई बहन को जानती हूँ कि उनको मैं कनेक्ट करूँ तो मैं मैच देखने जा सकती हूँ. तो आपको करेक्ट पाथ पता होना चाहिए जहां पे आपको जाना है. अगर मैं ऐसे घुमा घुमा के पाथ जाऊंगी तो आपका पाथ भी लंबा हो जाएगा. मैं आज जाके चैनल में अप्लाई करूंगी तो मेरे को स्टाइलिस्ट की नौकरी कब मिलेगी, क्योंकि चैनल तो वो हायर ही नहीं करता स्टाइलिस्ट. फिर जाके मैं प्रोडक्शन हाउस में करूंगी तो प्रोडक्शन हाउस बोलेगा मैं नया वाला क्यों हायर करूं, मुझे ये चीज चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है. तो आप एक जी. काम करिए, जाके स्टाइलिस्ट को ढूंढिए. तो मैं आपका काम शॉर्ट करके बोल रही हूँ कि आपको स्टाइलिस्ट और कॉस्ट्यूम में जाना है तो आप उन्हीं को अप्रोच करिए, उन्हीं के साथ काम करिए, उन्हीं के साथ ट्रेन करिए. 1 महीने 2 महीने क्या, मैं तो कह रही हूँ 2 साल भी ट्रेन करिए. यू नेवर नो मतलब कौन कैसा काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है. वहां से आपको रिलेशनशिप्स मिलेंगे, आपके साथ जिन्होंने काम करा है, Very true. आपका काम जिन्होंने देखा है कल को वो आप दूसरी जगह ले जाए. तो देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ रीचिंग टू द प्लेस वेयर यू हैव टू रीच, बट इट्स अ पाथ यू हैव टू चूज ऑन योर ओन. देयर इज नो रोड मैप Yes. कि ये रोड मैप है, आप सब यहाँ से शुरू करिए और A to Z आप पहुंच जाएंगे. और सबके अपने हाँ, अपने सबका शॉर्टकट्स होंगे. अपना अपना होता है. आई थिंक सबके जैसे जैसे जो जो चैलेंजेस आते जाते हैं उसी के हिसाब से रोड मैप बनता जाता है. Even if I would like to decide कि this is going to be my road map, you can't say it because according to the experiences we are supposed to make changes in that direction where we are supposed to go further. Because हमने सोचा था हम ये करेंगे, लेकिन वहाँ मुझे मजा ही नहीं आ रहा अगर, तो मे बी आई विल थिंक कि अच्छा मुझे इस तरीके से करना है या मुझे इस पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइजेशन करनी है. तो वो मुझे लगता है एक्सपीरियंस के साथ हम खुद को एक्सप्लोर करते हैं और आगे हम कैसे आगे बढ़ना है वो चीज भी हमें पता लगती है. और सबके एक्सपीरियंस की या सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, और हम सब अगर इंडिविजुअल और यूनिक अपनी जर्नी रखें तो वो ज्यादा रहेगा. वी आर गोइंग टू बी मोर कंफर्टेबल एंड वी कैन बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर इन दैट. आई बिलीव सो. जी. That's what I said ना कि there is no one single journey which कि मैंने ये फॉलो किया तो आप भी ये करो, आप यहाँ पहुंच जाओगे.
बिल्कुल नहीं। शायद आप जल्दी But- कहीं और पहुंच जाएंगे, शायद आप जी, मेरे से थोड़ा लंबा टाइम लेंगे, बट पहुंचेंगे। आपको वो सेटबैक्स लेने के लिए रेडी होना चाहिए, आपको ट्राई आउट करने के लिए रेडी होना चाहिए, मतलब ये सब चीजों के लिए रेडी होना चाहिए आपको। बट आई बिलीव कभी कभी कुछ लोग अगर आपके साथ हैं जिनको जो एक्सपीरियंस है, जैसे आपने कहा आप किसी को असिस्ट करते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से डेफिनेटली वो भी हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह से काम हो रहा है या उन्होंने क्या जर्नी की, क्या चैलेंज आए। तो मुझे कल आते हैं तो मुझे रेडी रहना है उन चैलेंजेस के लिए। अगर मैं उनके बारे में सिर्फ मैं ये सोचूं मुझे ये करना है और ये चीज बड़े इजीली मैं यहाँ अप्लाई करूंगी, यहाँ जॉब मिल जाएगी, फिर मैं ऐसे करूंगी, अगर मैं चैलेंजेस के बारे में नहीं सोच रही हूँ तो देन द पाथ इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस. So we Yes. should be ready, as per your suggestion, we should be ready to explore every opportunity, and we should be ready what is going to be there in our path, but we have to be determined to achieve our. All designers are supposed to be unique in our way. That is what we have learned from you, Nivedita ji, today. Thank you very much for Thank you. your precious time and such a clear guidance. So very clearly you have given us the vision how we are supposed to proceed further, and you have not given dreamy things ki you can do this. It is that is why we have invited you, that we can get a first hand experience or first hand guidance from you, from your experience and from your journey. Thank you very much. Now I would like to thank you. आज बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे माधुरी जी, और your जिनको voice बहुत is ही breaking again. नॉलेज मिली है, बहुत क्लियरिटी मिली है, और शायद आज एक हेलो, इज इट ऑडिबल Audible. नाउ? Audible. ऑडिबल? हाँ, मैं ये बोल रही थी निवेदिता जी, आज काफी सारे स्टूडेंट्स को, डिजाइनर्स को शायद बहुत क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि वो अक्सर सोचते हैं हमें ये चीज करनी है, कैसे करना है, शायद वो उनको आज काफी हद तक समझ आ। इसी तरह की मदद की उम्मीद रखें, आपके टाइम की उम्मीद रखेंगे तो आप श्योरली हमें वो देंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड द गाइडेंस. नाउ आई वुड लाइक टू ओवर इट टू नम्रता. And privileged to be a part of this wonderful Namrata? event. Am I audible? Yes. Yes. I feel so honored and privileged to be a part of this wonderful Yes, event. you are I'm audible. really very thankful to Nivedita ji, who has really shown us a right way to connect with people and how to grow in the fashion industry when we connect with the Bollywood or media platforms in different ways. On behalf of the organization, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Ms. Nivedita BASU, to make her presence and share her valuable knowledge and experiences to guide the process to connect and grow as a fashion designer. Thank you, Nivedita ji. Thank you, Namrata. Thank you, Madhuri ji. Pleasure being on board. Thank you. I would also you. like to thank Ms. Madhuri Verma for helping out all the designers to get a vast knowledge about media platform. Thank you, Madhuri ji. Thank you, Namrata ji. My special thanks to our CEO, Mr. Ankush Anami, for giving us an amazing platform where all the Indian designers unite to learn, support, and grow each other. Thank you so much, Ankush ji. I guess he's not there, but anyways, thank you so much. And my sincere thanks to all the members of World Designing Forum, students, and the most important of our technical team who has really been throughout the session and support us to stay connected without any disturbances. Though it was a network issue, but it was not their fault. I'm very much thankful to our core committee members, board members, current and formal member colleagues who have always stand by us and motivate us. I also feel very proud and thank you for making this event a very successful one. Count on your blessings and not on your problems. There is always a solution for everything. By saying this, I would like to take a leave. Thank you. Now, by sharing a small video so that you can get some insights about the Goa conclave, I would request the admin to share a small video of the Goa conclave.